1st June of 1945 at Kalicheri in Changanur, Kerala, Sriman Thomas Kudiravattam ji began his public life through student and youth movements and steadily rose to occupy important positions in Kerala's political landscape. Known for his simplicity, commitment to the public service, and concern for the poor and downtrodden, Sriman Thomas Kudiravattam was widely respected across political and social circles in Kerala. In the passing away of Sriman Thomas Kudiravattam ji, the country has lost a dedicated social worker and an able parliamentarian. I request the members to rise in the places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Om Santi Santi Santi. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. Papers to be laid on the table. Sriman Gajendra Singh Shekhawat ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2A in today's revised list of business. Thank you. Dr. Jitendra Singh ji. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2(B) in today's revised list of business. Thank you, Chairman, sir. Dr. Chandrasekhar Pemasani. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2C in today's revised list of business. Thank you. Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Shobha Karandalai ji, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 2, Class D of today's revised list of business. Sriman Kriti Vardhan Singh ji. Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at point number E of serial number 2 in today's revised list of business. Srimati Nimbuban Jaindibai Bambania ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपनी सहयोगी श्रीमती रक्षा खड़से की ओर से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक संख्या 2F के आगे उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखती हूं। धन्यवाद। Matters raised with. Sir, we have requested for LOP to speak for 2 minutes. 2 minutes. Thank you, sir. You have given me an opportunity to speak about the democratic principles of this country. Sir, Parliament means Lok Sabha and Rajya Sabha as per our constitution. We have got 2 chambers, and one is Lok Sabha, another is Rajya Sabha. But the Lok Sabha leader, LOP, is not allowed to speak, and he wanted to speak about the country's interest, sir. And whenever, how can we run the? My esteemed colleague and the leader of the opposition should know that the proceedings of the Lok Sabha cannot be discussed in Rajya Sabha.
And you have given ruling not once, many times. And previous chairmen have also given a ruling on it that the Lok Sabha proceedings cannot be discussed in Raj Sabha. And so such discussion. Now, matters rise. अगर इनको इच्छा है तो अपने पार्टी के सदस्यों को बोले कि लोकसभा में चर्चा करें और राज्यसभा में जो पूरी अच्छी तरीके से चर्चा चल रही है और प्रोसीडिंग चल रही है वो चलती रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। Now, matters rise with permission. Shriman Raiga Krishnaya. Respected Chairman, it is pertaining to separate ministerial department for backward class. Nothing will go on record except Shriman Raiga Krishnayaji's speech. There is no separate ministerial department look after the development of the welfare of the OBC This is, at central level who constitute 50% of the This is population. Acharya. This in is the not country. democracy what you are doing. There are 58 union ministries and 93 departments of central government. And also there are separate ministry for social group to like SC, ST, minority and women. There are separate ministerial department for recently formed fisheries and skill development and cooperative departments was established. But not establishing separate ministry for development of BCs who constitute 56% of the population in the country is not justifiable. In the central level, 27% of reservation being implemented in employment and education to BCs. National BC Commission, National BC Corporation, BC Parliamentary Committee also formed. These have been number of legal disputes on the issue of BC reservation and other issues. Number of problems regarding BC's reservation are arising frequently. Many schemes, projects intended for development of BCs require supervision, proper implementation of these schemes like post-matric scholarship, pre-matric scholarship, subsidy loans like that. At present, many states implementing various schemes and programs intended for development of BCs, else it requires to supervise this proper implementation. At this juncture, it is imperative to establish separate ministry department for the development of these communities. This is only can facilitate special attention for the development of these communities. So, separate ministry for BC should be provided at the central level and take special attention for all-round development of OBCs, more particularly education, economic, employment sector to the goal of Vikasit Bharat. All the state governments have separate ministries per basis to monitor and coordinate the states. Separate ministry per basis at union level is needed. Many problems pertaining to BCs and the reservations are coming to limelight nowadays. Under these circumstances, a separate ministry at government level should be Now, Honorable Minister of Parliamentary Affairs. सर अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी ने अचानक उठ करके 3 दिन से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का चर्चा में बहुत स्मूथली राज्यसभा चल Nothing रही will थी। go on record except the speech of Honorable Minister of Parliamentary Affairs. उठ करके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के नाम में कुछ मुद्दा रख दिया। मैं बिल्कुल ताज्जुब हूँ कि अचानक क्या हुआ जो खड़गे जी को आज ये बात रखना पड़ा। 3 दिन का चर्चा हम सब ने सुना है और जैसे अंडरस्टैंडिंग था कि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री बोलने से पहले वो अपना बात रखेंगे, उसको भी हम लोग ने माना है। चेयरमैन सर, आपके मौजूद में आपका चेयरमैनशिप में बैठक हुई ऑल पार्टी का, फ्लोर लीडर्स का बिजनेस एडवाइजरी बैठक, और हमने जैसे कांग्रेस पार्टी ने रिक्वेस्ट किया हमने माना है।
कल अचानक खड़गे जी का भाषण जैसे तय किया गया था उसको हट करके उन्होंने कल भाषण दिया, फिर भी हम आपत्ति नहीं करते हैं। लीडर ऑफ हाउस ने भी अपना बात रखा, बहुत अच्छा बहस हुए। आज चर्चा का चौथा दिन है, fourth day of the discussion on the motion of thanks to the Honorable President's address to the joint session of the Parliament. We all are expecting that all the honorable members will follow the traditions and the rules. This house belongs to all the honorable members. All the members are waiting to listen the speech of Honorable Prime Minister today. यहाँ कांग्रेस पार्टी अगर प्रधानमंत्री का बात नहीं सुनना चाहता है, हम उसका निजी, उसका चॉइस क्या है मैं उसको थोपना नहीं चाहता हूं, लेकिन बाकी मेंबर्स सब प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनना चाहते हैं, वो कैसे रोक सकते हैं। दूसरा, लोकसभा का जो प्रोसीडिंग्स है उसका हवाला यहाँ दिया, लीडर ऑफ द हाउस नड्डा जी ने भी कह दिया, दूसरा सदन का जो प्रोसीडिंग है उसको यहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए। ये अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट से यहाँ अपना रूल्स है, राज्यसभा का अपना रूल्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट करने का तरीका बनाया हुआ है, लेकिन आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नियम नहीं मानते हैं, रूल्स पे नहीं चलते हैं, वहां का स्पीकर रूलिंग पे नहीं मानते हैं। तो मैं वो करता हूं, उम्र बड़ा है, उम्र नहीं बड़ा है, आप ज्यादा सीनियर है, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपका लीडर ऑफ द हाउस राहुल गांधी को भटकने से आप क्यों नहीं समझाते हैं? वहां वो रूल नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से मर्जी से चलाना चाहते हैं, आप लोग समझाना चाहिए उसको समझाने की जगह आप खुद भटक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये अपर हाउस है, अपर हाउस का एक सम्मान है, यहाँ हाउस ऑफ एल्डर्स का रूप से भी माना जाता है। आपका लीडर ऑफ द बिल्कुल नियम जैसे जैसे तय किया गया बिजनेस पे हमको चलना चाहिए, और बीच में उठ करके अलग से यहाँ कोई माहौल खड़ा करने का कोशिश मत कीजिए। आज और बाकी लोग, कई लोग बोलना भी है, आज राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना बाकी है, उनका भी सुनना चाहिए। You go to your seat first. No, you first go to your seat. I know LOP. You all go to your seat first. You all sit in your seat.